أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अभी मेरे इस खिताब के बाद बल्कि इसके साथ ही जमात अहमदिया बुर्किना फासो का जलसा सालाना इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुंचेगा। कौन सा जलसा सालाना है ये? 15वां जलसा सालाना इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुंचेगा। इन जलसों का बता दें। La conférence annuelle de Jamaat Ahmadiyya de Burkina Faso, ce qui est le 15e conférence annuelle, va prendre fin, Inch'Allah. Assalamu alaikum zamawa. Obiligam tisiya wala ne runda zabra fa kya pehintigum tabkanwa. Siya wala Ahmadiyya zamawa simbe Burkina Faso ko ankanwa. Obiligam ta taramende be da sabzige bamme o tar gomni sina wa gomni tondunda wa. Yab goma nan gomni tondo wasaba gomdunda zabra. इन जलसों का मकसद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि दीनी और रूहानी मायार को बुलंद करना है। L'objectif de ces réunions, comme je vous avais déjà dit, c'est élever le niveau spirituel et religieux de tout le monde. Ya sida tonda ba tikisuka point yedono hin ba hetu mala wala kam taba kan nanti gum taba ya bonyinga ya hanna ila ton sunya la man kan lebe kan ton islam da tawle और मुख्तलिफ जगहों के लोगों का आपस में मिल बैठने से मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा को पैदा करना और बढ़ाना है। Créer une atmosphère de la fraternité lorsque tout le monde s'assoit ensemble. Aye lam ton sangese fonanya wa mabitado non taba tono la kam taba sikano. तो सबसे पहला मकसद रूहानी मायार को बढ़ाने के लिए यह है कि इंसान एक खुदा की इबादत करे। Le premier objectif pour augmenter le niveau spirituel est de créer l'amour, एक खुदा की इबादत करे, afin que tout le monde arrive à adorer un Dieu unique. Ton san nangese ton raba kanwa ton hantigum taba kanwa ya bonyinga ya hanna pami la ton mesa sunya inni wennam tan suka ya ton na yem wende ntun wende man wenda yemre anama zugu. अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। Allah dit aussi que j'ai créé les hommes et les djinns afin qu'ils m'adorent. Ton sangese wennam yelame tiye panan sin namba apanan ne salba gunzen yinga anana bi ibatu watu yen wende. इसीलिए इंसानों को खुदा का बंदा बनाने के लिए अंबिया मबूस होते रहे हैं। C'est pour cela, pour
faire les serviteurs d'Allah. Allah envoie les prophètes pour que tout le monde devienne les serviteurs d'Allah. ton sangese wennam pagom gum dan te ko botone wennam sun nan ton ti watu yen wenda yinga yari in kita ge tan ko onwa nyam tun tum namba ntum mutu wakane wata yen wennam ko ite pa man tun wende man wenda yemre और इसीलिए कामिल और मुकम्मल शरीयत की तालीम देकर अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया. Et c'est pour cela Allah a envoyé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant une loi parfaite pour tout le monde. ton sangese yari in kitu wennam nan tun kon sabab Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanan wakane nyeme be wala tun tumba po ko ila wane awakane na uzun wenda yemga ताकि तमाम दुनिया के इंसानों को इबादुर रहमान बनाया जाए. Afin que les hommes du monde entier deviennent les ibadur rahman, ça veut dire les serviteurs d'Allah. ton sangese apatum sa nabiyama bun singinga atum salam tawatu kon kiti wennam bunna sa siya adam bisa mbe dunwa we bisa na sa gilfa kiapi o batu kon la taba yi wennam yemsi wennam tunduba. और अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उन पर अमल करने वाला बनाया जाए. Afin que tout le monde devienne les gens qui suivent les commandements d'Allah. ton sangese alebe sagal galame talebe wa tiba fa kiapi wala kam tun wennam sagalle. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आपके रूहानी फरजंद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में इमाम बनाकर भेजा है. Et selon les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé son serviteur, ça veut dire le Messie premier sallam, comme imam de cet âge. ton sangese tuntum sallallahu alaihi wasallam goma pogongo obra goma kibarande ngtawre tun wennam sansake zaman yawga wennam tum na watum sa mahdi di mahdi wan na wa zamana bil fa kya bil imam ताकि इस्लाम की खूबसूरत तालीम को की असल सूरत में असल शक्ल में फिर दुनिया के सामने पेश किया जाए. Afin de présenter l'enseignement de l'islam sous forme originelle devant le monde entier. ya sida wennam tum salame tanawatu min dina ni wala suru ninga si asur songo na wennam bunasa la adam bi sa fa gildi. ऐसे लोगों की मोमिनीन की जमात पैदा की जाए जो हकीकी मानों में इबादुर रहमान हों. Et créer une communauté des hommes qui doivent devenir les véritables serviteurs d'Allah. ton sengese alebe wa men nan nom adam bi sa nan no ne salba to lebe ko boy to lebe ko fa gil kapis ya wennam yemse lebe wennam songom bi si. अल्लाह ताला की इबादत करने वाले भी हों और उसके अहकामात पर अमल करने वाले भी हों. Qu'il adore Allah et qu'il arrive à exécuter le commandement d'Allah. qu'il fa kapi watu on tun wende da lebe yarsit nawsugo mbi de wennam sagalla sagal ton tuma. हर किस्म के शिर्क ज़ाहिरी और छुपे हुए से परहेज करने वाले भी हों और अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत और हमदर्दी करने वाले भी हों. Qu'il s'abstienne de tout genre de shirk, que ce soit caché, que ce soit manifeste. alebe sagala ton adam bi ton wen tun ba tidin yo kudimenga mbah lagam tare ne wende han solo kon fa kapi la lebe venre. बस ये अल्लाह ताला का फजल व एहसान है कि इसने हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के सादिक की इस जमात में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई. Ça c'est la grâce d'Allah qui nous a donné le pouvoir de faire partie de la communauté de cet envoyé d'Allah. ton sangese ya wennam nema la man tondo ton ya nebni si ya nura kanga ton ya nebni si sakna bi ya man panga le betu yawa. बस ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि खालिसतन अल्लाह के होकर उसकी इबादत करने वाले बने. Alors c'est notre responsabilité vraiment grande que nous adorions Allah sincèrement à lui-même, lui seul. ton sangese lebe ka tondo musa wajib mu hando tondo tilmana bo etir fa yat nawzugu yem wende atum muwa la tagal tungun wenna man sagala la kile ko mesi bunni wenna hangi daga. अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि 5 वक्त की नमाजें अदा करो तो 5 वक्त की बाकायदा नमाजें अदा करने वाले बने. Allah nous enjoint d'observer les prières 5 fois par jour régulièrement. wennam sagala tondo til pus wakata nuwa be ko so vien fa kapi il pu wakata nuwa me obisise. और ना सिर्फ 5 वक्त नमाजें अदा करें बल्कि मस्जिदों में जाकर बाजमात नमाजें अदा करें ताकि मसाजिद आबाद रहें. Non seulement nous devons observer 5 fois par jour, nous devons observer ces prières dans la mosquée afin de faire habiter ces mosquées d'Allah. ton sangese wennam sagala ton pu wakata nuwa
apayet nir kam fa ki api pus wakata nuwa zini nguf sunda to fa kuma warare wennam sakla tondo tirpu wakata nuwa zini suwa me lagam tab zaman pu misa wa pusen बाजमात नमाजों में अपने शौक़ को भी बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। Vous devez faire des efforts pour observer les prières en congrégation et vous devez demander vos enfants aussi de le faire. ton sangese il somba men sakla zamanwa to pu wakata nuwa il lebe somba men lagam taba pu wakata nuwa il zini nebni sin tarab kena man sugula zini namna sama tumda अपने बच्चों को भी अल्लाह ताला से सच्चा ताल्लुक़ पैदा करने वाला बनाएं। Vous devez rendre vos enfants aussi qui arrivent à établir les véritables relations avec Allah. ton na sakla ko amba ne zakaramba tibawa man buni ngusun namane ton yala swala wen yala yem wende la ton pam nongolom la lagmantare ni wennam अपनी औरतों को भी अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बनाएं। Vous devez rendre aussi vos femmes qui doivent adorer Allah. il somba me sakla il pagaba tibamba me tun wende हमारी मसरूफियात या हमारी रवायात कभी अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल करने वाली ना हों। Nos activités ne doivent pas nous empêcher d'adorer Allah. ton songe iduni murar namba ton tu ma handar gindim ginma songo ndawa to konti tondo tidi yim wennam yelle mari wennam tundum yelle ये ना हो कि हमारी ज़रूरियात हमें अल्लाह से गाफिल करके दूसरों के आगे झुकाने वाली बन जाएं। Il ne faut pas que nos nécessités, nos besoins nous fait négliger l'adoration d'Allah et que nous arrivons à adorer d'autres personnes qu'Allah. il songe ton yora yam leda ton duni ka tuma ton duni ka bawba rawa to kon gidar tondo wen yembo ma wennam tundum ye बाज़ दफ़ा गैर महसूस तरीक़ पर रवायात या ज़रूरियात के शिरक में इंसान मुब्तला हो जाता है, इसलिए उससे बचें। Des fois, on arrive à plonger dans les traditions et inutilement, nous devons éviter tous ces genres de traditions. ton sangese rogami ka yala ton humanan rogami ka nisi ti bazaman islam daraba it somba men yokor menga lar kumusil menga mbahtum nisi na wangi da tondo ti wennam yembo झूठ भी एक किस्म का शिरक है, इससे भी बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। Mensonge aussi, c'est un shirk. On doit éviter complètement de ces shirk. Msambisi bukuma gom kasanga ubili gamti silimbedo me ayala amantara ni wende silimbedo ayala amantara ni wende siya bumbedre कोई भी बात जिससे ये शुबा हो कि इसका और मतलब निकल सकता है, कई मतलब निकल सकते हैं, उससे बचें। Chaque chose qui peut donner plusieurs significations, nous devons éviter ces genres de mots, utilisation de ces genres de mots. ton sangese gomni si nawe gom gedma gomni si sunna wasan batar gomni mana isongo yokar menga yi gom ko ya pokoy और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमेशा कौले सदीद से काम लें। Et selon ce que Allah nous enjoint, nous devons toujours essayer d'utiliser le qawlu sadid, ça veut dire il faut dire les choses tout droit. ton sangese bumning fa ki api wennam han saka ton ton tume il somba men gom si ya tentira gomde il somba men tengar men ngati daga antum bunning wennam han sakalda फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मोमिन को अल्लाह की राह में उस रिस्क से जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया है, उसकी राह में खर्च भी करना चाहिए, उस खर्च करने की आदत होनी चाहिए। Ensuite, Allah nous enjoint de dépenser à partir de la munificence qu'Allah nous accorde et nous devons dépenser à partir de cette munificence d'Allah. ton sangese wennam sakala tondo don tum bunninga so wennam sakala tonda ton gesin yem wende la ton pidis wennam alkaula अल्लाह ताला की राह में खर्च करना भी ईमान में ज़्यादती का बायस बनता है। Dépenser pour la cause d'Allah aussi vous augmente par rapport à la foi. ton modre antum wennam sakala wa la modre pass limango la wen zoyga अपनी हैसियत के मुताबिक चाहे थोड़ा दें, लेकिन दीन की राह में खर्च करने की आदत डालें। Vous devez dépenser selon vos possibilités, même si c'est peu, mais vous devez dépenser pour la cause d'Allah. il song me nyakan nafi ton wen bunin wennam kotondo jemta pawdam ta waw gamme il song mo nyake song wennam dina हमेशा ये मद्देनज़र रहे कि हमने अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ ज़रूर खर्च करना है। Toujours vous devez penser à dépenser quelque chose pour la cause d'Allah. wankar fa ki api il songo nyakil bumuliwa naf wennam sura yinga naf tum bumninga wennam bumninga na gite ton dina kyang tawre इससे तज़किया नफ्स होता है। Cela purifie votre âme. il modre il nyoya इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को नमाज के बाद इसकी तरफ खास तवज्जो दिलाई है। C'est pour cela Allah a attiré l'attention des fidèles
après la prière vers la dépense pour la cause d'Allah. Dari kite ti wennam na ngoro ton suya nan te ton gomde ti mo ngi le me la gan menga pu sa poin. अल्लाह ताला हमेशा हर अहमदी के ईमान में इजाफा करता चला जाए. Qu'Allah augmente et améliore toujours la foi des fidèles. Wenna songodo wenna tabani suya ni hakika wenna lebe songodo ti hakika ramba la wen zotba. और कभी ऐसा ना हो कि वो खुदा के फरिश्तादा को कबूल करके उसके हुक्मों पर अमल करने का अहद करके फिर उससे पीछे हटने वाले हों. Qu'il ne fasse ainsi jamais, qu'une fois faire une promesse avec Allah, qu'ils vont suivre cet envoyé d'Allah, et ensuite ils retournent et reculent. Ton sangese radik al kawla tidna banga wennam tuntuma tidon nan tuya wennam tuntuma al kawla likor pore ton lebe gudi naw pore ntara le pore. अल्लाह ताला हमें हमेशा ईमान और यकीन में बढ़ाता चला जाए. Qu'Allah nous augmente tout moment dans la foi et dans la certitude. Wenna lebe pas fa kapi wen zoyga la limango. लेकिन याद रखें कि ईमान की मजबूती भी अल्लाह ताला के आगे झुकने से और उसका फजल मांगने से ही हासिल होती है. Mais vous ne devez pas oublier que la fortification de la foi ne vient que pour adorer et s'incliner devant Allah. Ton sangese ton sombom bangame ti bum fa woten wan limango bum fa ten pas adam bi wen zoyga dilam ti yem wende la taban me ni bunni wen sa tonda. इसलिए असल यही है कि हमेशा अल्लाह के लिए खालिस होकर इबादुर रहमान बनने की कोशिश करते रहें. Donc la chose réelle est que toujours vous devez devenir les serviteurs d'Allah sincères et que vous devez adorer seul Allah. Bunni ngam nan sagale ti bunni ton nan yi fam limanwa ya ton nan ki tabni suwani hakiki ni wen yemwa dal gelen nan tum wennam ni bunni wennam ta ton tuma fati mana niya antuma erkete mohra ne bati amna yiri baya wusuko. फिर याद रखें कि किसी जमात की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें शामिल होने वाले मुकम्मल तौर पर इस जमात के निज़ाम के पाबंद हों. Il faut retenir aussi que tous les gens qui adhèrent à une communauté, ils doivent obéir et se conformer complètement à l'organisation de cette communauté. Ton sangese ton samawa hambang wenen tudawa la lebe tabni sura et somba me zama yanga et somba me lebe lagam taba ntu bunninga wala zama han sa tondo ma wata wadamba na tum ninga et somba me tabni nawa yala ni wayel kanga. इसलिए मोमिनों को हुक्म है कि वो हमेशा इताअत गुजार रहें. C'est pour cela Allah enjoint à tous les fidèles qu'ils doivent rester toujours obéissants. Yari kite tu wennam na sagal wen zotba wennam na sagal wen tunduba tu kelen taban wakata fa kapi ni wala wume la takuntu. और कभी ये ना हो कि अपनी मर्जी के खिलाफ बात सुने तो एतराज़ पैदा हो जाए. Et il ne faut jamais faire que si vous avez écouté quelque chose qui est contre votre désir et vous commencez à objecter et accuser les choses. Ton sangese wankato ninga obten sagala ton tum ninga timiti tumda apana kenan ton yor yam lewgoy il songe ti yella wantu badene ton daba bidla tari yella marwato gomba wala samsugo na sabah yella ton tawadamba sawatu sagale die. हज़रत इबादा बिन सामत रवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत इस उम्र पर की. Hazrat Ubada bin Samit radiallahu ta'ala anhu, il raconte que nous avons pris le bête avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les choses suivantes. Ton sangese a Ubada bon thabiti elame ti bam diga al kawla ni wennam tuntum sallallahu alayhi wa sallam ni wa ko ni so wata कि हम पसंद की सूरत में और नापसंद की सूरत में भी उनका इरशाद सुनेंगे और इताअत करेंगे. Que nous allons obéir les ordres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam même si cela nous plaît ou ne plaît pas. ko isarenam la ton na mananiya tuntum sallallahu alayhi wa sallam sagalsa baati sagalsa wa nom tondo ma pa nom tondo ton mananiya nantuya. तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह अपने मुकर्रर करदा अमीर के बारे में भी यही हुक्म दिया है. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint la même chose à propos de l'amir désigné par lui-même, la même chose. Ton sangese tuntum sallallahu alayhi wa sallam lebe sagalab me nga yora ni wala tum ninga o hongom ti loga कि सिवाय इसके कि वो खिलाफ शरीयत हुक्म दे उसकी इताअत करो. Et vous devez l'obéir sauf s'il vous demande quelque chose contre la loi. bum ni huwa sagaton fa japi il som muntu yame rillame tawa sagaton tum ninga suwa to ni wala sariwa. अल्लाह ताला के फजल से आप लोगों में आपकी कौम में इताअत का मौदा बहुत ज़्यादा है. Par la grâce d'Allah, dans votre nation, chez vous, les peuples, vous avez cet esprit d'obéissance d'une manière extraordinaire. Alhamdulillah il pega wende huzur pega ton zamawa
apere lam ti bunninga il fa ki api bam ges raporwa ton tabanda sunni hakika ton lebe la kamata me nan lebe tu zamawa ton lebe tabanda sunni hakika ti bunninga wasa ton yama ton fa irmana ni ambe aporin. अल्लाह ताला आपको इस वस्फ को हमेशा कायम रखने की भी तौफीक देता रहे. Qu'Allah vous donne le pouvoir de maintenir cette qualité pour toujours. Wenna konton panga wenna konton jidwa fa ki api wen zoyga tirkelen tabande de mese ni wa gomninga ob gomning mosno gawa. और कभी कोई शर पसंद आप लोगों के ईमान को ज़ाया करने का बायस न बने. Que aucune personne qui est méchante, il ne doit pas devenir une raison pour perdre votre foi. Ton modere tinenninga so wantu ya ne yogo so wantu ya sama il modo bracket ton tan soka ngwayi sababu nyimi ton wen yelle ngwayi sababu sayar ton sama waye. फिर बाज़ बुनियादी इखलाक हैं जिनका एक मोमिन में होना ज़रूरी है. Ensuite, il y a des mœurs fondamentales qui sont exigées pour un fidèle. Ton sangese ya wayal wusgo si wala nyaka yela so so manzindi ni wangwenzo ya wangwenzo nenge. इनमें से एक सच्चाई का खुल्क है. Et parmi ces mœurs, la première chose, c'est dire la vérité. Gomninga bongoma azogara renam la nisala si awen turi awen zo ta soma men gomde hi asir gomde. इस बारे में पहले भी मैं आपको कुछ बताया हूँ कि मोमिन की बात में हल्का सा शायबा भी गलत बयानी का नहीं होना चाहिए. Je vous ai déjà indiqué à ce sujet que dans les paroles d'un fidèle, il ne doit pas avoir une petite nuance même de mensonge. Ton sangese ya wabanda gomti lo gabala nenni si ya haki sobne wende nenni si ya wen tuda bunni nga hasombe ason ti ba wa gom nam pawote toto fa japi be ason ti sidimbe ba bilifu rakiya ba ma poye. इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, मुझे ये बात पहुंची कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे. Imam Malik il dit que Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu il disait. Ton sangese Imam Malik rahimahullah elame ti Abdullah bin Mas'ud ta Abdullah bin Mas'ud elame कि तुम्हें सच्चाई अख्तियार करनी चाहिए. Que vous devez opter pour la vérité. Ton somba me min muslimenga ni wasir to goma. क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है. Car la vérité vous indique, vous guide vers la vertu. Tibala ton sangese sida togosaga aya gum hun tak tondo aya gum hun kando tondo to manaro manaro fa point. और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है. Et la vertu vous guide vers le paradis. Ton sangese manaro me kanda tondo libeta tondo nigal arjena wa. झूठ से बचो क्योंकि झूठ नाफरमानी की तरफ ले जाता है. Vous devez éviter le mensonge parce que un mensonge vous guide vers la désobéissance. Ton sangese il so mon gung sar menga nyokor meng me yi wala zilimber pokoy bala zilimber pom pokoma ayita sababu ntal tondo beta ko tondo njangwa sange ma wala kiso pokoy ti kiso ma sangme takra tondo niber bugu muwa. और नाफरमानी जहन्नम तक पहुंचा देती है. Et la désobéissance vous guide vers l'enfer. Ton sangese me woman tondo me lebe takra tondo niber bugu muwa. तो याद रखें कि अगर सच पर कायम रहे तो जाती तौर पर भी कामयाबियां हासिल करेंगे. Vous devez retenir ces points. S'il y aura la vérité, toujours il y aura les bontés chez vous, il y aura des vertus chez vous. Ida mo ka mem sakala tondo ti mo kon tabande sunni hakika no am ti toyme bi mo kon gomne sida bala ton san tabande ni sida koma la si tuma ina yisa babo tal ne ma wo ne ma ko tondo. और जमाती तौर पर भी मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे. Ainsi vous allez avoir une fortification par rapport à votre communauté aussi. Rimena lebe yisa babo nta ko sunongo la tak managale ko tondi zaman pokoy. और मुल्की सतह पर भी आपका किरदार मुल्क को मजबूत करने वाला होगा. Ainsi votre comportement aussi fortifiera votre pays aussi. Ton sam roni sida to kaso anai ya sabab nta ko sunongo ko tondo la tak suno men le ko ton zamana ni ton bayira. फिर एक बहुत बड़ा खुल्क जो एक मोमिन में होना चाहिए वो अपने भाई से हमदर्दी और ज़रूरत के वक्त उसके काम आना है. Ensuite, le plus grand max qu'un fidèle doit posséder et qu'il doit sympathiser avec son frère et chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il doit essayer de satisfaire son besoin. Ton som ngesa me to si to sa ko ngwa nan le be pa hibu la mumini ngwen zota somba me yini mban zota ni wala ngwen na mbunansa somba me yini bunnan zota ni mban zota ni wala ne salba ne do wonel so wanta wa haja ma talla mudar ye mudar kya ngwa fo ne ngat so man ga yella bir mo ko lem pitse ba mudar dan ko ya. अल्लाह ताला की तमाम मखलूक से हमदर्दी का सलूक करना है. On doit toujours traiter
la créature d'Allah toujours avec sympathie. Et somba me nzan wẽnnaam bũn-naan sa wakat fãa gil kɛpɩ ne nimbãan zoɛɛga हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों और परिंदों से भी हमदर्दी फरमाते थे। Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la sympathie avec les animaux, même avec les oiseaux. nabiyam sallallahu alaihi wasallam ye nimbãan zoat ne wala bũmb mugsã fãa kɛpɩ ala n na n tʋg n tãag nin-liuuli और यही हमसे उम्मीद की कि अल्लाह की किसी भी मखलूक को कभी तकलीफ न दें। Et c'est ça qu'il espérait de nous, que nous n'allons pas faire mal à une des créatures d'Allah. yaa wã la bãmb na n kell n sagl tõnd sõnd me modg n tab ne sũuri n yɩ sababu n da tʋg n nams ne saala ma da tʋg n nams ne wa wẽnnaam bũmb mugsã fãa gilli यहाँ तक कि फरमाया जब जानवर को ज़िबा करो तब भी तेज छुरी इस्तेमाल करो ताकि उसको तकलीफ ना हो। Il a dit même que si vous devez égorger un animal, vous devez toujours utiliser un couteau qui est bien tranchant. yaa rẽn kɩte tʋm-tʋʋm sallallahu alaihi wasallam yeelame tõnd na yɩ nimbãan zoatba hal n tʋg n tã wẽnnaam bũn-naansã yaa rẽn kɩta yetɩ baa fo na n kõdga rũngã bɩ modg n saas sʋʋga tɩ saagã me n yɩ noog-sõma सामान उठाने वाले जानवरों पर बोझ भी उनकी ताकत से ज्यादा न लादो। Vous ne devez pas alourdir les animaux qui prennent le poids au-dessus de leur pouvoir, au-dessus de leur puissance. tõnd sã n gesme d pa sõm n leb zɩlg bũmb mugsa wa põesrãmb la tõnd sẽn tar n zɩlgdmã fãa kɛpɩ zɩɩb ninga n na n tʋg n yɩ rũm-muka pãnge तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उससे हमदर्दी करना, उसके काम आना तो एक बहुत बड़ा फरीजा है, बहुत अहम फरीजा है। À ce moment-là, ce serait une obligation très importante pour la personne que vous devez traiter avec une bonne manière avec tous les hommes. yaa rẽn kɩte tɩ yaa waagib ne tõnd fãa gil kɛpɩ sɩ yaa wẽn-tũudba tɩ d yɩ nimbãan zoatba la d zã wẽnnaam bũn-naansã ãd n biisa nimbãan zoɛɛga la sõngre और इलाही जमातों को मानने वाले इसकी तरफ खास तवज्जो देते हैं। Et les gens qui sont les adhérents des communautés divines, ils attirent leur attention plus vers ces aspects. yaa rẽn kɩte tɩ bãmb na n tak zãma wã fãa gil kɛpɩ n na n gõdg d sũyã n na n bõos tõndo neb nins sẽn sak n na n tũ wa silaamda neb nins sẽn sak n na n tũ yẽb wẽnda tɩ fãa gil kɛpɩ zogda a yiba bn sɩfa yẽ la gom sɩda la yɩ nimbãan zoagda d fãa modg n tabend d mees ne wa yala a yiba zugu अल्लाह के बंदों से हमदर्दी के बारे में एक रवायत में आता है, Il est dit dans une tradition à propos de sympathie avec les hommes d'Allah. yaa tɩ wẽnnaam yeelame tɩ b na n kõ tõnd wala dalili bɩ bilgri ne wala neb ninsi sẽn yaa wala nimbãan zoatba wẽnnaam ninsaalbã pʋgẽ wã हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत के रोज़ फरमाएगा, Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, il raconte que Allah a dit, tõnd sã n gese abu hurayra wẽnnaam yɛrd bɩ a yĩnga a togsame tɩ wẽnnaam tʋm-tʋm yeelame Allah dira le jour de jugement, tɩ wẽnnaam na n yeela alkiyam daare क़यामत के रोज़ फरमाएगा Allah dira le jour de jugement, tɩ wẽnnaam na n yeela alkiyam daare कि ए इब्ने आदम मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। ô homme, moi j'étais malade, pourquoi tu n'es pas venu demander des nouvelles? wẽnnaam na n sʋka ãd n biiga wala buudã daare yaa fo mam neda yaa bõe n kɩ tɩ mam fãa wa yõk maam mam wa bẽeme tɩ pa wa kaag maam बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी इयादत कैसे करता जबकि तू सारी दुनिया का परवरदिगार है। Le serviteur dira que, oh Allah, comment je pourrais venir te demander ta santé, et comme c'est toi qui es le créateur de tout le monde. wãnkar kãnga ad n bii na n lɩka wẽnde mam na n yɛm alhaam bɔgɔ n wa bãng fo zĩiga n wa tʋg n kaag fo n sʋk fo n ges laafɩ maana wẽna la m yaool n pa mi fo zĩiga अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे पता नहीं चला कि मेरा फलां बंदा बीमार था तो तूने उसकी इयादत नहीं की थी। Allah dira, est-ce que tu ne savais pas que voilà tel de mes serviteurs, il était malade et tu n'es pas parti lui demander sa santé? wãnkar kãnga wẽnnaam na n lɛka lame fo ba bãng tɩ mam yemsã pʋgẽ mam tũudbã pʋgẽ zagla wa n yika bãaga maa zagl wa n dʋya pa keelem tɩ fo ba kẽng n tʋg n kaaga la क्या तुझे मालूम न था कि अगर तुम इसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। Est-ce que tu ne savais pas que si tu partais, lui souhaiter la bonne guérison et tu allais trouver à côté de lui moi-même? ya fo pa mi tɩ fo sã n kẽngẽ fo kẽngra sabab n tʋg n maan wala n maan doog n kõya ma kẽnga tɩ ba wa tɩ b n tʋg n kõya wã yɩda sabab n sugsa pãaga fo sã n kẽng n na n tʋg n kaagame fo na n mikã tɩ maama wẽnnaam bɩa ne फिर अल्लाह फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना तलब किया तो तूने मुझे खाना नहीं दिया। Ensuite, il dira que, oh homme, je t'avais demandé à manger, mais tu m'avais pas donné à manger. wẽnnaam leb na n sʋka yamba n ges yaa fo sagla mam da põosa fo rɩɩb n na n dɩla fo pa sak n kõ maam dɩɩba tɩ m dɩ wa
इस पर इब्ने आदम कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। Et le serviteur dira que, oh Allah, toi tu es Rabbul Alamin, tu es le Seigneur de tout le monde, comment je pouvais te donner de manger? wankar kanga aran di nan de ka wende ya ko wende ko la kunna ta pa ti ya ni la badwa mamna ya wani wa family la wa to konji la ko अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे याद नहीं कि तुझसे मेरे फलां बंदे ने खाना मांगा था तो तूने उसे खाना नहीं खिलाया था। Allah dira que toi tu te rappelles pas que tel de mes serviteurs il t'avait demandé à manger et toi tu avais refusé de lui donner à manger. wankar ko wennam nan le kalame ko ba mam ya muhinda ya kom laga mara ni ba ni da wa fo ne ngop mo fori nandi ti fo mo ngangi ko me to ko nan ko yala क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तुम उसे खाना खिलाते तो तुम मेरे हजूर उसका अजर पाते? Est-ce que tu ne savais pas si tu allais le faire manger, tu allais trouver la récompense de chez moi? ko ba me to san ke ngan nan to ko bawri ben nan ko ya fo nan pa na si ma wennam ron da ji kangla फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने मुझे पानी नहीं पिलाया था। Ensuite Allah dira, oh homme, je t'avais demandé à boire et tu avais refusé de me donner à boire. wankar kanga wennam nalbe su ka yamba ya ko en kido bayunu mam ko mamu wa mo fo ko mun na yuko yuda wankar mam sa hawa इब्ने आदम कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता जबकि तू ही सारे जहानों का रब है। Le serviteur dira, oh Allah, comment je pourrais te donner à boire comme c'est toi qui es le Seigneur de du monde entier. wankar kanga yamna yela wende mam yita wena mba wala ri mba wa ko mun ko fotu fiyu la fo wennam yunu bunnan sa fa ki kapi mete ngwa zuga इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझसे मेरे फलां बंदे ने पानी मांगा था मगर तुमने उसे पानी ना पिलाया। Allah dira que tel de mes serviteurs il t'avait demandé à boire et c'est toi qui avais refusé de lui donner à boire. wennam na yela wakatra ninga mam yamba zakala na yiko yungur sa wa fo nengen na wa bons ko man na yunga fo kita kame mo nga sabato pa na ko ya ko mata yu अगर तुम उसको पानी पिलाते तो उसका अजर मेरे हजूर पाते। Et si tu allais le donner à boire, tu allais trouver la récompense de chez moi. ko pa me to sana ba ko man ko ya sabato yu fo nan pa maronda yene yima ma wennam nengan la इस बारे में हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, À ce propos, le Messie premier il dit, yel kanga yingan kiti mahdi alayhi salatu wassalam yele सच्चे नेकों की ये आदत होती है कि खुदा की रजा जोई के लिए अपने करीबों को अपने माल से मदद करते हैं। les gens qui sont des véritables serviteurs d'Allah, ils cherchent toujours à aider ceux qui sont leurs proches. nebni si ya wa wennam yim sa haki kan tabal sunni wen tuduma bam la yam ni sunna ya sunna uzugun na song ro wennam bunna ta ne murar ram bil sugu और नीज इस माल में से यतीमों के तहद और उनकी परवरिश और तालीम वगैरह पर खर्च करते रहते हैं। Et à travers leurs biens, il arrive à dépenser pour les orphelins et pour les autres pauvres. bam la nebni isme na lebe song wala ki zilab na song ni wani ba namba ma miskin ba और मिस्कीनों को फ़क्र फाका से बचाते हैं। Et il arrive à protéger les gens qui n'ont rien à manger, rien à boire à travers contre la famine. tubnan lebe yi sababu na song watal se la miskin ba la nebni zu wa to yab ko mulus ma ki bam namba ya na zugu song ramba और मुसाफिरों और सवालियों की खिदमत करते हैं। Il arrive à servir ceux qui voyagent et ceux qui demandent. bam la nebni isme lebe song wa nebni isme be so ken zugu ma wa nebni isme batar be wa na ya sabza kan ron nam bon song ra और इन मालों को गुलामों को आज़ाद कराने के लिए और कर्जदारों को सुबकदोश करने के लिए भी देते हैं। Et il arrive à dépenser leurs biens pour libérer les esclaves et les autres pauvres personnes. la lebe nan dikab arti ase nan song wala nebni sin ya yemse nan da dikab arti asa man yemna to le burkimba la lebe song ne ro ne fa kya pi yabni ba nam batar song ba फिर आप हमें अहमदियों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, Ensuite, en conseillant à tous les Ahmadiyya, il dit, ayem ti wakar kon obna sala wala atun ahmadiya ramba obiyelame वो ऐसे कौम के हमदर्द हों कि गरीबों की पनाह हो जाएं। il doit avoir une telle sympathie qu'ils doivent devenir une protection pour les pauvres. il somba me yinim ban zotba il somba men tabal nawa yalla song wala nebni si imbatar tonga यतीमों के लिए बतौर बापों के बन जाएं। Ils doivent devenir comme des pères pour les orphelins. il somba me lebe yi wala ba wala ki ba yinga और इस्लामी कामों के इंजाम देने के लिए आशिक़-ए-ज़ार की तरह फिदा होने को तैयार हों। Il doit être toujours prêt comme un amoureux pour servir l'islam. il somba men lebe yi nebni si ya wala tabal sunne hakika yas nauzugu yi wala ne ba hansi gale na song watul mabita se ya ne valam sa wennam nong lam yinga और तमाम तर कोशिश इस बात के लिए करें कि उनकी आम बरक़ात दुनिया में फैलें।
Et ils doivent faire des efforts maximum. Ils doivent faire leur maximum pour répandre ces bénédictions partout. de mono da me ma ton me panton te aka sayre wala koy konga la mo ron pidisi wala bum to sala ni ngam sakal tonda और मोहब्बत इलाही और हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो Et qu'il fasse ainsi que le source de l'amour d'Allah soit accumulé à ce moment. मोहब्बत इलाही और हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो Qu'il fasse ainsi que le source de l'amour d'Allah et que cette eau pure se réunisse, s'accumule à un seul endroit. ton mo da ke ti wala wennam tundum wennam nonglum wennam sonra wala am taba yi bum muriyanga zintona adam bi sa sunya poin और फिर एक दरिया की सूरत में बहता हुआ नजर आए Ensuite, ça doit couler comme une fleuve. ton mo da ke tawai sababan zoy da ke wala mogore अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इन्हीं अकामात और शहादात की रोशनी में जमात मखलूक खुदा की खिदमत करती है Et selon ces recommandations du Messie premier et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Jamaat Ahmadiyya arrive à servir l'humanité. ton sange se wala ne nabiyama han sagale se wala ne qur'ana han sagale se wala ne sama ta wadamba han sagale ya ton mo ton ahmad ya ramba fa kapi way nimba zotba ladi wena ladi nimba wen tunba चंद खिदमात जो इन मुल्कों में जमात अदा कर रही है उनका मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ Ici, je vais vous expliquer certains services que le Jamaat Ahmadiyya est rendre à l'humanité. ton nan to sakan bilifu se wala jama ahmadiya samawa bunni ton mande so kon wane damdo ताकि अल्लाह ताला के फजलों का शुक्र भी अदा किया जाए और इसमें मजीद वसअत भी पैदा की जाए Afin de remercier Allah par rapport à tous ces services qu'Allah nous donne le pouvoir et ensuite on arrive à répandre ces services aussi. wenna ko tongo wenna kilan tamdo tilpama so kon wane damdo dar pama tun wende dar son wenna amdina अल्लाह ताला के फजल से जमात के हर तबका में खिदमत खल्क का एक फ़ाल निज़ाम मुकर्रर है Par la grâce d'Allah, dans toutes les couches de Jamaat Ahmadiyya, il y a un système de rendre des services à l'humanité. ton sange se zaman ahmadiya zamawa ni wennam nema da wennam songra ton tar ton sang sange so wala tunu da pogonwa se wasama tunu da ton nam mi kame wennam di kaswaya so wiso nan ko ahmadiya zamawa to pama so kon nedam do ताकि हर उम्र और तबका के लोग खिदमत खल्क कर सकें Afin que tous les âges, tout genre de personnes arrivent à servir l'humanité. ya wali kite ti wala adam bi sa fa kapi ton ne ba fa gil kapi pam tongo lebe so kon wala adam ne salba औरतों में खिदमत खल्क के लिए लजना माइला यानी अहमदी ख्वातीन खिदमत के लिए कोशां रहती हैं Les lajna, parmi les femmes, ils restent toujours prêts à servir l'humanité de cette manière. ton sange se waton maramba fa ba fa kapi sun bebe wa o kele ya nauzuhu inke lam pame son ne dam do labini ban zotba na ila pam tidina kyang tawre नौजवानों में ये एहसास दिलाने के लिए कि खिदमत खल्क कितना अहम काम है खुदावंद अहमदिया ये काम सर अंजाम देती है Et le Khuddam al-Ahmadiyya font ces services et cet esprit est créé chez eux pour montrer l'importance de ces services. ton sange se si wala ahmadiya khudam namba bam la waton ka ko pogoda il mekelo ya tad nauzuhu way ne tuma ban tumda babu jeng yinga ya silam dana pam kyang tawre la silam do son yinga ऐसे गरीब ममालिक जहाँ हर एक इनफरादी तौर पर इतनी माली वसअत नहीं रखता कि वो माली मदद कर सके वहाँ अपने कम वसाइल से हर अहमदी इस जज्बे के तहत कुछ ना कुछ खिदमत खल्क करता रहता है Et dans les pays pauvres où les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour servir la religion, à travers cet esprit, ils arrivent à participer d'une manière à l'autre pour servir l'humanité. ton sange se ahmadiya zamawa ni watema nisi zaman nisi wena mbutiya zamana ya zaman kyagamse ya taram zamana bampa masurni nga na songa wala zamana ni wala adam ne dam do so ngo क्योंकि मेरी ये बातें इस वक्त दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अहमदी सुन रहे हैं इसलिए इस तरीके से मैं उन्हें भी पैगाम देता हूँ कि मरकज़ से रब्ता कर कर खिदमत खल्क के निज़ाम को मज़ीद वसअत दें ताकि अफ्रीकन ममालिक में और ज़्यादा वसअत पैदा की जाए Comme c'est
याद रह गया तो बोलो। Comme ces paroles sont transmises aux autres pays aussi, c'est pour cette raison, à travers cette source, j'arrive à attirer l'attention du monde entier, à toutes les communautés, qu'ils doivent aussi contacter le centre pour offrir leurs services. बहरहाल जमाती तौर पर इस वक्त भी अफ्रीका के बाद गरीब ममालिक में तालीम और सेहत के मैदानों में अल्लाह ताला के फजल से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। Par la grâce d'Allah, même actuellement, on est en train de rendre les services exemplaires dans plusieurs pays de l'Afrique, même actuellement. La tabanda kanga nanke le sogon wani sal nedam do la nanke le zoy wani sal ni banara hati tumda ni songra fa kapi ketin kenda duni wa por zugu to tan de yibe होगा। तालीम के हवाले से ही मैं यहाँ बुकीना फासो के अहमदी बच्चों को भी नसीहत करना चाहता हूँ कि तालीम हासिल करने की तरफ खास तवज्जो दें। Ici aussi, je voudrais attirer l'attention des enfants vers l'éducation. À tous les enfants, je dois attirer l'attention de ces enfants qu'ils doivent faire des efforts par rapport à l'éducation. क्योंकि अहमदी बच्चे का तालीमी मयार दूसरों से बुलंद होना चाहिए। Car le niveau d'éducation de chaque enfant ahmadiyya doit être meilleur par rapport aux autres enfants. और अगर आप में इतना टैलेंट है कि आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहें तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। तो माली कमजोरी की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपकी तालीम में हर्ज नहीं आएगा। जमात इंशाअल्लाह उसको पूरा करेगी। Si vous avez le talent de sortir de votre pays pour l'éducation et vos moyens ne vous permettent pas, Inch'Allah, la communauté va vous aider et cette chose ne va pas vous empêcher d'avoir un niveau supérieur par rapport à l'éducation. Ndatu bangara bawgo la bratu fur songo ti wenna ba ko panga to na yin lo ante zaman zem son to on karma ton sangese ton amadiya zamanwa idmana niya nan la amtaba so ba maram kid fa kiapi to pa lo ante zamana we visa nasa mpa bangara nara takbir takbir nara takbir حضرت خليفة المسيح الخامس حضرت خليفة المسيح الخامس خلافة أحمدية خلافة أحمد नारे तकबीर। फिर आजकल कंप्यूटर की तालीम भी बड़ी ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए से यहाँ कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं। Ensuite, l'informatique aussi est très important dans ce jour. Et ici aussi, on a ouvert des centres d'informatique pour l'éducation des gens. जहाँ से सैकड़ों नौजवानों ने फायदा उठाया है। À travers ces instituts d'humanité d'abord, plusieurs centaines de personnes ont pu profiter de ces centres. इंशाअल्लाह ताला इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा और मजीद वसअत दी जाएगी। Inch'Allah, nous allons avancer davantage ce travail et nous allons répandre ce travail davantage. Nara takbir! Nara takbir! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Nara takbir! Wennam sansa ke kwamba kara wani ne ba lutu mun gira babun nanke le yalaskai zamawa si ahmadiya zamawa idmana niya nanke le yala tumda ntal tumda tawayi bum yabun kazan naf zamawa। जमात के नौजवान खास तौर पर इससे फायदा उठाएं। Les jeunes de cette communauté doivent surtout profiter de ces centres. Ton somba me ton yawa ton kompo gadam be kani ya bang bawrba ilake yondon gusie il somba me ndoy suka nke sil men karon apogen wakala ninga be sifa mbanga nutu ma katiaka.
ताकि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों। afin que les jeunes ils arrivent à avoir les occupations à travers cette chose, des emplois aussi. na yi sababu titono kom pogada ni ton ni ni ya be kwamba ton pam nu tuma ton pam tiklu ninga ton sana pam tiki man vui ma hangwata लेकिन बाज़ दफ़ा ये कंप्यूटर गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए अहमदी हमेशा इससे बचें। Et des fois ces ordinateurs sont mal utilisés aussi et les Ahmadiyya doivent s'abstenir de faire ce genre de choses. ton sange se wala ordinateur damba bangara neb sanda rikla lame nan to mo bang ninga la tum ninga sinan dia mo adam biga ton Ahmadiyya zamawa ton wen tumba il somba me nyokor mese la nyokor sunya yitum kai pokoin अहमदी की सोच हमेशा पाकीज़ा रहनी चाहिए। La pensée d'un Ahmadiyya doit être toujours pure. ton sange se ton Ahmadiyya ramba il sunya ne fa ja be dina pokwa asomba me yila kamenga tamenga to yilamde सेहत के बारे में भी मैंने बताया था, अल्लाह ताला के फजल से जमात इस मैदान में भी खिदमत कर रही है। Et par rapport à la santé aussi, je vous avais déjà dit que par la grâce d'Allah, le Jamaat est en train de rendre de grands services dans ce domaine aussi. ton sange se ne mbuide na pam la fi yinga ton Ahmadiyya zamawa idlebe yetum da ton tongo idna yisababu mpa wa adam bi salafi idna yisababu tilafi kene banin tabtan suka तो अफ्रीका के दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ बुकीना फासो में भी जमात ये खिदमत सर अंजाम दे रही है। Et comme dans tous les autres pays de l'Afrique, et en Burkina Faso aussi, le Jamaat Ahmadiyya est en train de rendre ce genre de services. ton sange se wala dunu Ahmadiyya zamawa ton sogon wala la do na pa yinga we ti loto emda la kama be dunu we visa nasa ni wen nam ton don Burkina Faso kame obsinga ne ba tipo il pa ma tip team number na songo ne ba na ke ton yala to at pa panga यहाँ वागाडुगू के अलावा 8 दूसरे रीजन्स में भी जमात के एलोपैथिक और होम्योपैथिक क्लिनिक काम कर रहे हैं। Et en dehors de Ouagadougou, dans les autres régions de Burkina Faso, il y a d'autres centres de santé qui sont établis ici. ton sange se sampa wa kame ton sange ton porfen ramba po wasi wa Burkina Faso kanwa ilebe pa ma loto yiramba dar pam hospital damba na yi sababu tine ne buida na pam la fi wa yinga जहाँ पर बग़ैर किसी तखसीस के मज़हब की तखसीस के गुरबा की मुफ्त इलाज किया जाता है। Où les pauvres arrivent à avoir les soins gratuits et sans distinction de race ou de la religion. bunninga nebni simbe ton suka ya nimba namba ya talse ti wakata ninga paten pambari na latima ton Ahmadiyya ramba mana wala to yiram sanda ti pamba anna isababu ti potalam dalasa zalam to pana ya wuligide और अब तक लातादाद मरीज उनसे फ़ायदा उठा चुके हैं। Et jusqu'ici, de nombreuses personnes ont pu profiter de ces centres. ni wa ban sifiya ni sa ton sangese neb son ya wuso son wa to pam ti pa zalam go fin sifa फिर दुनिया की दूसरी जमातों की तरह खून के एहतियात भी नौजवान देते हैं। Et il y a aussi les dons du sang, comme tous les autres jamaat du monde entier. ton sangese watan kana Ahmadiyya ko po da kanwa wakar sanda riya ga dar zima son nebni zima hansawa wa hantun dunwa we visa nasa hankilla किसी माली मनफियत या नामो नबूद के लिए नहीं देते, बल्कि खालिसतन खिदमत खल्क के लिए देते हैं। C'est pas pour montrer que nous avons beaucoup de la richesse, c'est simplement et tout simplement par rapport à la sympathie avec l'humanité. ton hantum tum ni sabah nawi ni zama ton yara kanamba bah nawi ni zama ton tara ton ma ton tara arziya ka yin nam ne baye ya nawi ni gi ton nimba zo ya ka la ton so go ni wen nam ni gunnan sa la nedam do फिर जमात सिर्फ मेडिकल सेंटर या क्लिनिक्स में काम नहीं करती, बल्कि मेडिकल कैंप्स भी मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाके लगाती है। Et le Jamaat non seulement se contente de ces centres, elle fait aussi les camps mobiles, aussi pour aller dans les régions assez lointaines pour donner ces soins aux gens qui n'ont pas l'accès à ces centres. ton sange tan Burkina Faso kana Ahmadiyya zama wasan be kanwa wanka to ninga lo to yamba yitame nker mo wa pokoy ntipu nebni si sembe boy wa pokoy bato pa ngati poka wakat son rusugo editame le tipu ne na pa son watar ta nimba namba और दूर दराज इलाकों में हजारों मरीजों ने इनसे फ़ायदा उठाया है। Et dans les régions assez lointaines, milliers de patients ils ont profité de ces camps mobiles aussi. ni wen nam tonga ton san nangesi zama wa pokoy Burkina Faso kane lo to yamba yitun ko nwa ne so ya wusugo son wa to pam tipu ko wa bum ninga hansifa ठीक है। फिर हदीस के मुताबिक
कि अल्लाह ताला कहेगा कि मेरे बंदे ने पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, अगर तुम पानी पिलाते तो मेरे से अजर पाते। जमात अफ्रीकन ममालिक में पानी के नलके लगाकर जहां पानी की किल्लत है, इस कमी को भी पूरा करने की कोशिश करती है। Et selon le hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah disait que moi, telle personne qui avait soif et vous n'avez pas donné à boire, pour accomplir cet enseignement, le Jamaat Ahmadiyya a aussi établi les pompes à eau pour fournir l'eau à ceux qui n'ont pas d'eau. ton sangese wa ahmadiyya zama hambe burkina faso kanwa tuntum sallallahu alaihi wasallam yelame wa ngom tira lugha tungen nam nasu kayam alki omdare mam yam wa kosfo mam moza foko nanyu fo kida mamam pakonwa ti yam nan leki am yita wani yunu fo tungen nam yita mam yam wa am ko yunu wantar mam yamba ko baton ko yunu ganwa nam pi tungen nam koy ko ngawa tun ahmadiyya zama karmana wa kombramba ti wala bi waton de jinje sanda poge na isa babo ne ba kene yongor ko ma yur zalam wen yinga और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहले भी नलके लगाए गए हैं और इस काम में मजीद वसअत भी पैदा की जाएगी। Et comme on a déjà établi ces pompes à eau, Inch'Allah nous allons étendre davantage ces travaux. ton sangese ni wen nam tonga il pa ma mel du wala kombramba da wen nam sansa ga zamanan ke tongwate tumda ya hanna sing bala idna ya la tumda ti zaman be kai ne bu so fa ke wato kom pa tumda baraka। ये चंद मुख्तसर खिदमात थी जो मैंने जिक्र कर दी। C'est quelques services que j'ai racontés devant vous. तमाम का तो जिक्र नहीं किया जा सकता। Tous les services on ne peut pas détailler devant vous. aye lam ti wotonwa yal ya wor bilfu o ban sifton dum winigi si wala ga ma ata hantum tum ni si laf manani an nan tume la tum ke to wa wusugo o papa man gominande। इस मुल्क की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है, जो इम्तियाज़ ये है कि यहाँ MTA के अलावा रेडियो इस्लामिक अहमदिया के नाम से रेडियो स्टेशन भी चल रहा है। La distinction de ces pays est encore qu'en dehors des MTA, il y a aussi une radio islamique Ahmadiyya qui fonctionne dans ce pays. ton sangese wala burkina faso kane wakati ni nga MTA be kane ton famin get wala dina so hono yelle ton sanle be gese isanle wabobo gilaso ton nammi kame ton ahmadiyya ramba il fama wala radio si asila amba radio to ton fa ke be fama wennam ko isan radio kan po hoy जो गो पूरे मुल्क को तो नहीं लेकिन एक काफ़ी अच्छी आबादी वाले इलाके को कवर कर रहा है। Bien que ça ne peut pas couvrir le pays entier, mais ça couvre quand même une grande partie où il y a beaucoup d'habitants. ton sangese radio hamana abato yango burkina faso ki faye la ne wennam tonga zama so ya wuso pam da men nafdu men wennam gama kelso radio kan yinga जिससे लाखों लोग सुनते हैं। Et centaines de milliers de personnes, il arrive à profiter de cette radio. ni wala ton sangi radio ni ngof mbiliga zama wuso sembe wala ton zamana poonwa o to empa men nafo menga ni radio kan goma Nare takbir! Nare takbir! Radio Islamic Ahmadiyya Bubajlaso! Radio Islamic Ahmadiyya Bubajlaso! Nare takbir! तो अब जहाँ वो रेडियो स्टेशन है बोबो जुलासो का नारे में नाम भी ले दिया है। Où se trouve cette station radio, et ils ont même prononcé ce nom dans le Nara. ton sangese tibar bondo bobo gilasiwa zining waton ahmadiyya ramba radio ambe zininga riya sababo porno sa yura bilse ka yura tirfa ke pepa mum tenga yure और इसकी नशरियात अब 17 घंटे तक होती हैं। Et ces transmissions continuent jusqu'à 17 heures. ton sangese gom wala radio hambe bobo wa akonda ton ki bayani wadina yelle halan nan to ta wala wakar pila yo koy dila ton ni yele wala 5 heures अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को इस जरिए से नूर ईमान में बढ़ाता चला जाए। Qu'Allah augmente à travers cette source par rapport à la lumière de la foi. wenna lebe pas wala zum ningo men sifa songo ningo songo zamana poonwa wenna kele songo ta yalge mpa man kele yalga men lebe pas ni wen zoyaga और जिन्होंने अभी तक इस ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना वो भी उसको पहचानने वाले हों। Et ceux qui n'ont pas encore reconnu l'imam de cet âge, il arrive à connaître à travers ces moyens. om lebe ko ta wende lebe ni simbe tan zamana poonwa lebe ni simbe tan poonwa nan ke ba famli ton zamana limama wenna ko bra makil ta fa hango to pa ma faham limama antu। अब मैं चंद अल्फाज
औरतों के लिए कहना चाहता हूं क्योंकि वहां अलहदा उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिल सका। Maintenant, je vais dire certaines choses, certaines paroles à propos des femmes, comme je n'ai pas eu l'occasion de dire ces paroles là-bas chez elles. mabita sai sin yar maramba wuki ko yan kelere khuzu ayyadahu Allah ta'ala bi nasril azizi lame tubra ko ngelen fama ko yan to asid maramba dibara wenna ngamba ko to ko fama ki bam ne ngwana ngom ne ko isai। औरतें याद रखें कि उनका इस्लामी मुआशरे में एक बहुत बड़ा मुकाम है। Les femmes doivent retenir qu'ils ont une très grande valeur par rapport à la société islamique. ton sangi sed maram si apparaba il somba membange tubutara wala yenning yalso ninga ti yalso aya kumusin tar panga la lebe kumusin tar yodo watona adam bisa guyem ko अगर उन्होंने अपने मुकाम को ना समझा तो आइंदा की नस्लों के दीन पर कायम रहने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। S'ils n'ont pas pu connaître leur statut, donc il n'y aura aucune garantie par rapport aux générations à venir. ton sangi sed maram si ya wala paraba be ton zama ko o santo yimi ti bandala yalso ninga yalso si ya wajibi tar yodo ayita sababu Il n'y aura pas de garantie pour les générations à venir. ton nami kame ton nebni sun wataba o panam pam yalso ni zi इसलिए अपने मुकाम को समझें। C'est pour cela que vous devez reconnaître votre statut, votre valeur. ton pagamar ton maramba yari inga il somba membang ton yalso zinga il somba membange ton mang dar jawa hante bi zininga वरना वो अपने खामतों से बेवफाई कर रही होंगी। Sinon, elles seront infidèles par rapport à leur mari. ton samba to mbang ton yoda ton samba to mbang ton yalso zinga ton samba to mbang ton alkara hanyi to ninga anayi sababu ngwata ke dubu menga ma ko ke gare ton ta ton de silba tawre अपनी औलादों से बेवफाई कर रही होंगी। Elles seront aussi infidèles par rapport ou à l'égard de leurs enfants. ton sama ka maramba sama woto anayi sababu yugo yoko to biwa ke gare ba ob ko manenge और सबसे बढ़कर अपने पैदा करने वाले खुदा से बेवफाई कर रही होंगी। Et avant tout, elles seront infidèles à l'égard de Allah lui-même. ton sange se ob sanyi mbam menga alkarra anayi sababu ko to menga to boyi nebni sinya nen kiaga ngwen men ton tawre। इसलिए सबसे अहम और ज़रूरी बात हर अहमदी औरत के लिए ये है कि वो हर वक्त अपनी इस्लाह की कोशिश करती रहे। Donc la première chose que chaque femme doit faire attention, elle doit faire des efforts par rapport à sa réforme. ton sange se o na sala maramba na sala paraba ti ni kan fa ke bimbe yam ko hoy asom mon ton ga ti ga ti ga amen ton ko hoy और इसके लिए अपने खुदा के हुजूर झुककर उससे मदद मांगे। Elle doit chercher l'aide d'Allah en s'inclinant devant lui. asom ba memba ngwen nam songre ni wa ko ka menga kyang wen ton wenge कि वो आपकी भी इस्लाह करे और ये भी तौफीक दे कि अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को सही इस्लामी तालीम दे सकें। Qu'elle arrive à se réformer et elle peut aussi éduquer et bien élever ses enfants aussi. asanto on yar sama ni wolto ina yi sababu tamenga te tiraga amenga sante tirame na yi sababu ne ko tongo ta tonta kwamba ni ne wonel fa ndu ko ko ni mete tiraga। इसलिए औरतों को इस्लामी तालीम को अपने बच्चों में मुंतकिल करने के लिए खुद भी दीनी इल्म सीखना होगा। C'est pour cela les femmes, pour transmettre l'éducation religieuse chez leurs enfants, elles doivent obtenir eux-mêmes d'abord cette éducation spirituelle. yari kite tono maram ne ni senda tan ngubu ko amba ngubu songa tono maram ni si ndatan karam ko amba si wala dina karonga ton zo mo tum tum ninga e tono mo tono me zande ngan te tiraga it me san te tiraga mo zat na ton ko amba me ne tono pokata fa ke te tiraga। फिर आजकल के माहौल में बहुत सी बुराइयां हैं। Et ensuite, dans l'atmosphère d'aujourd'hui, il y a beaucoup de vices qui sont répandus dans la société. ton sange se idna mi kame to waruna woto nuwa yale yor yor busugo so wan to on yalage tono ku ma ko onwa बेइंतहा अखलाकी बुराइयों में मुआशरा मुलव्वस है। La société est plongée dans les vices extraordinaires. ton sange se ton de zamawa ton neba idwa to on disame idwa to on dugudame yale ngwe mes ko on wisugo। एक अहमदी औरत का काम है कि इससे अपने आप को बचाए। Une femme ahmadiyya doit se protéger contre tous ces vices. ton sange se ton ahmadiya maramba ton ahmadiya pagni sim bibukanwa it somba men yokol men larki to me sanyoya yiwa yele pe ningo hen sifa और अपनी नस्लों को भी बचाए। Elle doit aussi protéger ses générations de ces vices. it somba men ne be gida kali me se larki to ne ni som por ton da fa ke pi yele wen ni sifa sifa ramba वरना याद रखो तुम पूछी जाओगी, सवाल की जाओगी। Sinon, vous devez pas oublier
que Allah vous demandera les comptes. ton sa yimi billa yimi ti alkiyom dare wennam nam ko tan soke wayed nisa al hale ton on dikan do ton ti tuma और याद रखो कि अल्लाह की पकड़ से हमेशा बचना चाहिए। Vous devez toujours faire des efforts par rapport à l'attrape d'Allah, que Allah va vous attraper si vous n'allez pas obéir ses enseignements. mabita se si ahmadi aram be kana pa bala fan saganda il kengir mese ngon khir mese yeli woda ko hay da layimi ti waton tum nisa alkiyom dare wennam nam bori la meso ke tuma lebe roldo अगर अपने आप को और अपनी औलाद को गन से बचाने की कोशिश करती रही तो अल्लाह तुम्हें जन्नत की बिशारत देता है। Si vous avez évité vous-même de cette saleté et vos enfants aussi de cette saleté, Allah vous donne la bonne nouvelle du paradis. ya sida oblebe yelame ton sangi de mese yi wala yela ngwe nis bamba hansifa yuri gad nis ngwe bamba hansifa dar gida ko amba iri yakasa wennam sansa ko wennam ko ton kibano game la wala arjana kom एक रवायत है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Hazrat Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala anhu, il raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ton sangi se hadra abdurrahman ibn auf wennam yarad be yinga ayelame tum wennam tum sallallahu alaihi wasallam yelame कि जिस औरत ने पांचों वक्त की नमाज पढ़ी la femme qui a observé les prières 5 fois par jour, ti pa sa pu sabakata nuwa dar to gonwa और रमज़ान के रोज़े रखे elle a jeûné pendant le mois de Ramadan, ti pa sa ndo no rakiuga और अपने आप को बुरे काम से बचाया elle s'abstient pour toutes les mauvaises choses, ti pa sa ngi daga menga yel be da fa kya pitumbe और अपने खावंद की फरमा बरदारी की और उसका कहा माना, qu'elle a obéi toujours son mari, ti pa sa ntu yasida la gana kata amenga asita ule ऐसी औरत को अख्तियार है कि जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहे दाखिल हो जाए। une telle femme aura le choix de rentrer dans le paradis de n'importe quelle porte qu'elle veuille. ton sangi se pa sa ntu yela nasab hansifa alkiyom dare anantu sa arjina daga no ya arjina daga no ninga sanda tenje अल्लाह करे कि हर अहमदी औरत अपने खामदों के हकूक़ अदा करने वाली हो। Allah fasse que chaque femme Ahmadiyya arrive à satisfaire les droits de son mari. ti bamba nan ko sa wenna ko ton ahmadiya maramba wenna ko ton ahmadiya paraba te tonre entul silba wa wenna ma hasaglam pa me tum na rondo अपने बच्चों के हकूक़ अदा करने वाली भी हो। Qu'elle arrive à rendre les droits de leurs enfants, ses enfants. tu wenna ko ton me tu lebe te ko ambati daga और इनकी सही तरबियत करने वाली हो। Qu'elle arrive à bien éduquer ses enfants. tu wenna ko ton ko tu ko amba ubsongo इनको नेक माहौल में परवान चढ़ाने वाली हो। Qu'elle arrive à élever ses enfants dans une atmosphère qui doit être une atmosphère de la vertu. tu wenna ko ton ko tu te ko amba da bu ko amba ni hu ninga nan tala ba kyang managare la kyang nedamne और इस तरह अबदी जन्नतों की वारिस ठहरे। Ainsi, elle aura la nouvelle du paradis pour toujours. ayati tan tum kaya obna ko la koy no ko me labna pa ma arjun ko yenke अल्लाह ताला हमें भी और हमारी औरतों को भी और हमारे बच्चों को भी ये तौफीक देता चला जाए कि वो हमेशा दीन पर कायम रहने वाले हों। Qu'Allah donne à nous-mêmes le pouvoir de s'établir sur la religion, à nos femmes aussi et à nos enfants aussi. wenna ko ton ko ti pa man du songo la teti ti daga ton me san ton pa ba me yasa एक खुदा की इबादत करने वाले हों। Elles doivent adorer un Dieu unique. e somba men tu wenda yemre आला अखलाक का नमूना दिखाने वाले हों। Elles doivent montrer un modèle de mœurs, de meilleures mœurs. e somba me lebe winigi wala biligi ya biligi songo si wala la fi la yolso biligi और अल्लाह ताला की मखलूक से हमदर्दी करने वाले हों। Elles doivent toujours montrer la sympathie avec la créature d'Allah. ob somba me yasana maramba e somba me lebe winigi wani banzo ayga ni wala wenna bunna anta gilli अल्लाह ताला हमें उन तमाम दुआओं का वारिस बनाए जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जलसा पर आने वालों के लिए की हैं। Qu'Allah nous fait le mérite de toutes les prières que le Messie premier il a fait pour toute personne qui doit venir participer dans ces jalsa. tu wenna ko tondo baraka ninga la nema ninga mahdi alayhi salam ko wende tu wenna ko ne do wonde fa kyapi so wantu ko wa jalsa wala tisu go kanwa अल्लाह ताला खैरियत से आप लोगों को अपने घरों में वापस ले जाए। Qu'Allah vous fait retourner chez vous avec la bonne santé. tu wenna lebe ko ton wote lebe dia nin la fi da suno और अपने अपने इलाकों में आप अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम के सही सफ़ीर हों।
que vous allez devenir les ambassadeurs, véritables ambassadeurs de l'Ahmadiyya, qui est le véritable islam, wẽnna kõt chez vous, dans votre région. wẽnna kõt tɩ tãg tɩg n lebd yɩame bɩd leb tʋg yɩ tʋm-tʋʋm niisi na n yɩm tẽed yaa tʋm-tʋʋmba la b leb tẽed neb tɩrga d zãg lebd yɩɩ wã और लोग हमेशा आपसे नेक नमूना हासिल करें। Que les gens arrivent à obtenir des exemples avec vous, et le meilleur exemple avec vous. wẽnna kõt wã tõnd tõnd leb d zã lebd yɩa bɩ wẽnna tɩ ra tɩ ra sõngo tɩ nebã wa tʋg n dɩk tõnd tɩdgra t'a yɩ bũmb tikr yaa tɩ sõng ne nebã अल्लाह ताला इस मुल्क पर भी अपना फजल फरमाए Qu'Allah accorde ses grâces sur ces pays aussi. wẽnna leb n ya rɩk neemã ne wẽnnaam yolsgo n kõ tõnd zamaana kaan n burkina faso और इसको तरक्यात से नवाजे। Qu'Allah lui accorde des progrès extraordinaires. wẽnna leb n kõ taoor kẽngre la neemã paasgo और हर फितना और फसाद से हमेशा इसे महफूज रखे। Qu'Allah le protège contre toutes sortes de zizanies. wẽnna leb n gɩdgdo tɩ d yɩ yel-wẽnd fãa kyapi la yel-beed fãa gilli वज़ीर आज़म और सदर साहब ने मेरे साथ बड़ी मेहमान नवाजी का सलूक किया, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ा दे। Le Premier ministre et le Président, ils ont réservé un traitement extraordinaire avec moi. Qu'Allah leur accorde une récompense extraordinaire. tõnd sã n ges tõnd tẽngã taoor saba tõnd tẽngã milf dãmba b fãa kyapi saka bãmba b reega bãmba b n kõ wẽnde wẽnna marsb yɛla n kõba wẽnna leb marsb mũrar dãmba gil fãa kyapi n pid sẽn kõda और इनको बेनफ्स होकर अपने मुल्क के अवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। Que Allah leur donne le pouvoir de servir leur peuple sans aucun intérêt. wẽnna leb n kõ b tõogo tɩ b zãb neba la b zãbg b zãma wã wẽnd yĩnga tɩ b zãbame t'a wala bãmb mũrar la pidsg yĩng ye ताकि ये मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होने लगे। Afin que ces pays soient comptés parmi les pays avancés même. tɩ tõnd paam tõnd burkina faso kaane wa tʋg yɩ tẽngã n na n kẽng taoore wẽnnaam sõngr yĩnga और याद रखें कि अहमदी की दुआएं अगर नेक नीयती से की जाएं और नेक नीयती से अहमदी दुआ करता है तो बड़ी मकबूल दुआएं होती हैं। अपने मुल्क के लिए बहुत दुआएं करते रहें। Vous ne devez pas oublier que les prières d'un Ahmadiyya sont toujours avec une bonne intention et ces prières sont toujours exaucées et vous devez continuer à prier pour votre pays. la d sõng n daa tʋg n yɩme tɩ wala ahmadiya ned fãa kɛpɩ sã n na n põos wẽnnaam bɩa mõota põosga yɩ bõo tɩlga la m leb mõota põosga me yɩ wẽnd yĩnga la d nanna ãdem-biisã fãa fo sã n kos wẽnnaam yel-kãngã wẽnnaam na pids mũraadã n kõ fo अल्लाह ताला आप सबका हाफिज व नासिर हो। Qu'Allah vous protège tous. tɩ wẽnnaam maan d fãa kɛpɩ gũudum दुआ कर लें। Maintenant nous allons prier. d na n maana doagr fãa maan d ne-a zẽk d mosi आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।